Okay. Now the question over here is saying that we have to find the equations. Okay. The most important thing which over here they are saying is that equations of tangent with gradient 3/4. Okay. This is given to me and I have to find the equations of tangent over here. Okay. So first of all, I'm drawing a rough sketch over here so you can get that. So I've done a rough sketching over here. As you can see, this is a circle, this is the center, this is the radius, and this is the tangent line. Rough sketching I have done over here. Okay. Now, as they are saying in the question, I have to find the equations of tangent with gradient 3/4 on the circle x square plus y square equals to 4. So first thing which they are giving us over here is that they are telling us that the gradient of tangent is 3/4. This is the first thing which they are telling us, right? So if the gradient of tangent is 3/4, what is going to happen? We know that tangent and radius makes 90 degree. Okay. So if the gradient of the tangent is 3/4, the gradient of the radius will be -4/3. Okay. Now this is going to be my center, which is A comma B, and I need this coordinate over here. Let me mark it as x comma y. Gradient is already given to me. If I can find this gradient, this point, I can find the equation of line over here, equation of tangent. Okay. Challenge. Let's see what we can do over here. First of all, the equation of the circle which is given to me is x squared plus y squared equals to 4. That is the equation of tangent given to me. While the original equation of circle is given, and the original equation of the circle is minus 2ax minus 2by plus a square plus b square minus r square equals to 0. That is the working which is given to me. Okay. So what I'm going to do over here, I will start with comparing coefficients. Okay. I'm going to compare the coefficients over here. What is that comparison? See, coefficient of x over here is, I will start with the coefficient of x. The coefficient of x in this scenario is minus 2a equals to. Now, as you can see over here, I don't have any x coefficient over here. So what I can do, if no x coefficient is there, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और जस्ट वो कर देता हूँ so you guys can get the idea properly. Okay, मैं इसको थोड़ा सा और मार्क आउट कर रहा हूँ. अच्छा गाइस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये तो आपके सामने लिखा हुआ है ना.
अच्छा, अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे कोई भी x का वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 0x, क्योंकि 0 इंटू एक्स विल बी 0, चीज ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। इन द सेम वे कैन आई राइट 0y इक्वल्स टू 4 एज इट इज रहेगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0x प्लस 0y इक्वल्स टू 4, यही इक्वेशन है। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से बना दी। ठीक है, तो अब देखो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -2a है, राइट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है, राइट। तो फिर अब हम इन्हीं को आपस में कंपेयर करेंगे, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू कंपेयर इट, -2a विल बी कंपेयर्ड विद this thing, so the value of a will be coming 0. -2 is being multiplied. When I will shift it over here, it will be 0 upon 2, so 0 upon 2 will be 0. This is going to be my first value. A is coming 0 over here. Now, going for comparison of y. Okay, so comparing coefficient of y, over here it is -2b, and over here it is 0. So the coefficient will be -2b equals to 0, which means b equals to 0 is your result over here, is your value over here, b equals to 0, right? A is coming 0 and B is coming 0, and this A and B are representing what? Center over here, right? A is 0, B is 0. So it means the value of the center which I have got till this point is coming 0, 0. Okay, the center coordinates are coming 0, 0, right? Now, last thing, going for my radius. So we know that comparison of the constants, constant. A square plus B square minus R square. Right? A square plus B square minus R square. Okay. And if I will shift this 4 on this side, like minus R square, etc. ना, तो it was equals to 0. तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चलो एक चीज मैं कर रहा हूँ, तो देखो मैं ये जो प्लस फोल्ड इक्वल्स टू फोल्ड लिखा हुआ था, मैं इक्वल्स टू 4 को इस तरफ जंप करवा दे रहा हूँ, इक्वल्स टू की इस तरफ ला रहा हूँ, सो इट विल बिकम व्हाट, -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -4 है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सही है, तो
इसको यहाँ पे इक्वल्स टू -4 कर देते हैं। एक ही जगह पे प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 0² प्लस 0², -4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 4, और -r² उस तरफ चला जाएगा, +r²। So 4 equals to r². So the value of r is coming to over here, r equals to 2, right? So I've got a, b, and I have got the length of radius also over here, which is coming, radius I have found out, okay? And I'm writing it over here in this one. Radius is coming 2. Okay, guys, this is the thing which I have got till this point. I have got the center coordinate, I have got radius of this thing, I have got gradient of this line, and I have got this coordinate which I have to find the value of x and y. जैसे ही मुझे x and y मिलेगा, I will put it in equation of line with this gradient. I will have the equation of tangent. Okay, that is the main working I'm going to do. Now, beta, all of you, if you pay attention on this thing, f as I have got it over here, तो उन्होंने हमें gradient जो मैंने निकाला है, the gradient which I have got over here is my -4/3. तो अब मुझे जरा इसी gradient को लेके चलना पड़ेगा to do some important work over here. Have a gradient of this line is already given to me. Let me just mention it over here so you guys can get the idea. Gradient of radius is -4/3. Radius of the radius is -4/3, which was calculated between center and x, y. ठीक है, मैंने सेंटर और x, y के दरमियान में जो ग्रेडियंट निकाला है, दैट इज कमिंग -4/3. ठीक है, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ द ग्रेडियंट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1. अच्छा, मैं कुछ वो चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनकी वैल्यूज में पहले ही निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं उसको फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ just to form a relation. ठीक है, when I will solve it further you will get the idea. Center coordinates हमारे पास जो आए थे, that were coming 0, 0. ठीक है, और एक्स वाई तो हमारे पास एक्स वाई ही है, तो let's plot it over here. 0, 0. Let's make it as x1 y1 and this will be x2 y2. ठीक है, so when I will plot it, what will happen? This will become y -0 over x -0 equals to -4/3. ठीक है, तो y -0 will be y upon x -0 will be x equals to -4/3. y equals to x की वैल्यू उधर जाएगी तो -4x/3. ठीक है, this is a relation which I have got and I am going to use it in the upcoming working. ठीक है, चलो भाई, ये भी आ गया मेरे पास, एक y का रिलेशन आ गया, y is coming -4/3x. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Now
हमारे पास इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का एक डिस्टेंस मौजूद है विच इज कमिंग 2, रेडियस इक्वल्स टू 2। अब मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर करो सब जरा। व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज दैट डिस्टेंस डिस्टेंस between center and between center and point of intersection which is basically equals to r radius। ठीक है, यहां से लेके ये जो को पॉइंट है, दिस पॉइंट जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के साथ, उस पॉइंट से सेंटर तक की चीज क्या कहलाती है हमारे पास? रेडियस कहलाती है। तो नाउ आई एम पुटिंग दिस थिंग इन द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, distance formula, we know that distance is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे पास? रेडियस हो जाएगा। वैल्यूज प्लॉट कर देता हूं। x2 की जगह x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 की जगह y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो जो रेडियस हमारे पास आ रहा है वो मेरे पास रेडियस कितना आया हुआ था? रेडियस था 2 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू प्लॉट नहीं करेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। ओके बेटा, सो रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप देखो तो वाई स्क्वायर का ये मैं पहले ही निकाल चुका था कि वाई किसके बराबर है? -4/x, -4x/3 के। तो मैं वाई की जगह वैल्यू रख दे रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। ओके, वैल्यू ऑफ y जब मैं यहाँ रखूंगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज दैट 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस -4x। ठीक है, 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर ओवर 9, right? So let's take LCM. 4 equals to 9x square plus 16x square over 9. So shifting 9 on the other side, this will become 36 equals to 25x square. So 36 over 25 equals to x square. So जब मैं अब इसका रूट लूंगा, अब देखो इन्होंने सवाल में क्या कहा था? इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट।
तो जब इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट कहा था तो मैं जब इसका रूट लूंगा तो मैं प्लस माइनस दोनों को लेके चलूंगा. बी केयरफुल अबाउट इट. सो द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन आई विल टेक द रूट ऑन बोथ साइड, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कमिंग plus minus 6 upon 5. Okay, this is my value coming over here. ठीक है. So now when I'm going to simplify it, what is going to happen? As I have to find x, I have already found. Now I have to find the value of y also. Okay. So how will I do this working? See beta. At x equals to 6 upon 5. y क्या दिया हुआ था आपके पास? ये रहा y. Y equals to minus 4 over 3 into value of x, that is 6 upon 5. तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो my result will be coming minus 8 over 5. Okay. जब मैंने 6 over 5 रखा है तो वैल्यू क्या आ रही है? minus 8 over 5 आ रही है. और at x equals to minus 6 over 5, जब ये वैल्यू में रखूंगा यहाँ पे y equals to minus 4 over 3 into minus 6 over 5. ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और दिस विल बिकम 8 over 5. ठीक है. तो अब आपके पास सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो बेसिकली ये बन रहा है इस वक्त अब आपके पास कि देयर आर टू सिनेरियोज विच वी हैव. जब x, y दो वैल्यूज हैं, जब x की वैल्यू तुमने रखी है 6 over 5 तो y की वैल्यू आ रही है minus 8 over 5. ओके. और जब x, y में वैल्यू रखी है minus 6 over 5 तो इसकी वैल्यू आई है 8 over 5. ये इसका रिजल्ट है. अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी ग्रेडियंट की चीजों को वन बाय वन इन दोनों के साथ रखता जाऊंगा और मैं अपनी इक्वेशन बना. Okay, now guys, so I have got the coordinates of x and y as it is shown over here, and I have got the gradient also which is shown over here. So now what I'm going to do over here is that first of all I will start with the first one for x comma y equals to 6 over 5 comma minus 8 over 5. Okay, this is the thing. This is the first one which I'm going to use to get my result. Okay, so equation which I'm going to use over here is y equals to mx plus c. Okay,
So the value of y, which I am having over here, is minus 8 over 5 m. M will be 3 over 4 and x will be 6 over 5 plus c. So when I'm going to simplify it, what is going to happen? Minus 8 over 5 equals to 2 to the 4, 2 3 the 6. So it will be 9 over 10 plus c. The value. Okay, so I've shifted this thing over here directly. So on simplification, taking LCM will be 10 minus 16 minus 9 equals to c. So the value of c is coming over here. C equals to minus 25 over 10, which is minus 5 upon 2. So this value I will be plotting it back over here to get my equation over here, right? In order to get the equation, plot the value of c over here with m. Okay, so y equals to m is 3 over 4 x minus 5 over 2. So this will become y equals to, taking LCM will be 4, 3x minus 10, right? So the final result will be 4y equals to 3x minus 10. This is one equation of tangent I'm getting when I have used this value 6 over 5 comma minus 8 over 5 over. Now I'm going to do the same working for this one, which is given over here. See, for x comma y, which is given to me as minus 6 over 5 comma 8 over 5. This is the values which we are given. Plotting again in the equation, y equals to mx plus c. So in place of y, I will be writing the value of y over here, which is 8 over 5. Value of m is given to me as 3 over 4. This is the value of m. Okay. And x is given minus 6 over 5 plus c. So 8 over 5 equals to, this will become 2 to the 4, 2 3 is a 6. So minus 9 over 10 plus c. So I will shift minus 9 over 10 on the other side. So it will become 9 goes to c
So taking LCM will be 10, 16 plus 9 equals to C, which will become 25 over 10 equals to C, and C equals to 5 over 2. Okay, this time the value of C is coming 5 over 2. Plotting it over here with in play with value of M. Okay, so I can see what will be my result over here. Let's just separate this thing, right? So y equals to M is 3 over 4x plus 5 upon 2. Okay, so y equals to, taking LCM, it will become 4, 3x plus 10, shifting 4y equals to 3x plus 10. Okay, 4y equals to 3x plus 10. This is the result. Okay, this is one equation. 4y equals to 3x minus 10, right? And this is the other equation, 4y equals to 3x plus 10. As they have asked for, find the equations of tangents. So these are the two equations of tangents which I have got.